Hello students, sorry for the delay. We had completed our female gametophyte. Now we are going to start with types of ovules. Now depending upon the position of micropyle and the funicle and even the chalaza, the ovules are of 6 types. They are mostly asked in the exams. Sometimes the diagram is given or sometimes you have to just name them. The upright ovule, where the micropyle is at the tip, we call it as orthotropous. And if the micropyle is downwards, then we call it as anatropous. And if the micropyle is horizontally placed, or we can say at right angle to the funicle, we call it as hemitropous. When the ovule is slightly tilted downwards, not exactly downwards, then we call it as compylotropous. You can see the micropyle is downwards here. Then we have got amphitropous. In amphitropous, the micropyle is almost downwards and the position of chalaza and micropyle are almost on the same line. That is amphitropous. And the sixth one is cercinotropous. Cercinotropous is something like a analog watch has got a spring in it. So that spring type structure we call it as cercinotropous. You can see the funicle is just moving around and the ovule ultimately becomes something like orthotropous. So this type we call it as cercinotropous. And here you can see that integuments and the funicle, they fuse to form raphe, a very important structure which you may find in seeds. Now at this stage, I expect that we should be clear about difference between male and female gametophyte. You should please write down about the two and you can share it in my comment box. Now we come to pollination. Now both the gametophytes are formed and we know that the two cannot move, so there has to be some transfer, and this transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Pollination ends as the pollen reaches the stigma. जैसे ही pollen स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया, pollination complete हो जाती है. जब हम pollination के बारे में बात करते हैं, इसको हिंदी में परागन भी कहा जाता है. ये दो तरह की होती है, that is self pollination and cross pollination. Now self pollination की जब हम बात करते हैं तो self pollination जो है उसमें it is transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower or to the stigma of another flower on the same plant. And thus, because of this, we divide it into autogamy. Auto means same flower, and geitonogamy, that is different flower of the same plant. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक ही प्लांट है. यहाँ पर दो फ्लावर्स मैंने शो किए हैं डायग्रामेटिकली. तो यहाँ पर एक फ्लावर में एंथर से अपने ही स्टिग्मा पर पोलन्स जा रहे हैं, दैट इज ऑटोगेमी. और जब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तब हम किसे कह रहे हैं? गीटनोगेमी. सेल्फ पॉलिनेशन इज फॉर्म्ड बाय होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी, यानी कि ये इसको फेवर करते हैं दोनों, होमोगेमी या क्लिस्टोगेमी. होमोगेमी का मतलब होता है व्हेन एंथर्स एंड स्टिग्मास दे मैच्योर एट द सेम टाइम, एक ही बार में दोनों मैच्योर हो जाते हैं. नेचुरली फिर सेल्फ पॉलिनेशन ही एक प्रोसेस है. और क्लिस्टोगेमी, एक्चुअल में अगर हम बोलें तो क्लिस्टोगेमी मीन्स हिडन मैरिज. ये फ्लावर्स वो होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं करते, ये बड कंडीशन में ही रह जाते हैं और खुलते नहीं हैं. और इन्हें हम, जैसे आप देखते हो ग्राउंडनट, मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया इसका बोटेनिकल नेम है. इसके ऑपोजिट क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कौन से हैं? जो कभी ओपन नहीं करते. और इसके ऑपोजिट हो गए चैज्मोगेमस फ्लावर्स जो ओपन होते हैं, जिनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं.
Then we come to cross pollination, the second type of pollination. In cross pollination, we see there is a plant A, there is a plant B. So, and here the plant A and B, they will be genetically different. So, the anthers are opening and pollens are moving from plant A to plant B or vice versa. So, cross pollination is transfer of pollen grains from anther of a flower to stigma of a genetically different flower of another species. It is also called xenogamy or allogamy. The transfer of pollen grains thus requires help of some external agencies. So in short, I have tried to explain all the agencies, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ले जाने के लिए कोई तो सोर्स चाहिए, और वो सोर्स या तो विंड होगा, या वो आप जैसे देखते हो बटरफ्लाइज होती हैं, या कोई इंसेक्ट्स होते हैं, या मे बी वाटर कैन ऑल्सो बी द एजेंसी, और इवन एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, दे कैन ऑल्सो बी द एजेंसी. सबसे पहले हम एनिमोफिली. एनिमोफिली का मतलब है बाय विंड. नाउ द फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत छोटे होते हैं, दिखाई ना देने लायक, एंड दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, और इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ड्राई होते हैं और वाटर प्रूफ होते हैं. और जो ये एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, इनके जो स्टिग्मास होते हैं वो बहुत प्रोट्रूडिंग होते हैं, स्टिकी होते हैं और फेदरी होते हैं, जैसे ग्रासेस में आप देखते हो, या इवन पाइनस जो है उसके अंदर भी आपको ऐसा मिलेगा. Then the second type is by water or hydrophily. Now naturally the plants which are inside water or in water, they will be using water as their agency to transfer their pollen grains, like Hydrilla, Vallisneria. Then zoophily. Zoophily is, that is by animals. Zoo means animals, so it's by animals. Like here I have given an example, elephant. It helps to pollinate Rafflesia. रेफ्लेशिया जो है वो एक पैरासिटिक फ्लावर है जो रूट्स के ऊपर, रूट पैरासाइट है, और ये ऑलमोस्ट 1 मीटर डायमीटर का होता है, और जब एलिफेंट इसके ऊपर चलता है तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं. देन एंटोमोफिली, दैट इज बाय इंसेक्ट्स. ये सबसे कॉमन है जो हमें दिखता है. इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होते हैं, वो इवन कई बार इंसेक्ट्स को भी इमिटेट करते हैं कि ये इंसेक्ट जैसा है, तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. एंड दे हैव नेक्टर, दे हैव स्टिकी पोलन ग्रेन्स. सो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण जो इंसेक्ट्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट, ब्राइट कलर्ड होते हैं बहुत, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. दैट इज़ बाय एंटोमोफिली. सो दिस इज़ अबाउट द pollination, and we'll be further doing about double fertilization in our next lecture. So thank you for, and any questions or any queries, please put it in my comment box. Thank you.